यहाँ तक हम पहुंचे थे, हमने फ्यू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व किए और हमने ऑब्जर्व किया कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और अगर करता है तो क्या इसके नुकसान। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वी हैव इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। फर्स्ट केस ये है कि नो सोल्यूशन। द सेकंड केस, if the solution exists, then it maybe there are infinitely many solutions. And the third thing is that the solution is unique. Existence of interval को I think अभी हम छोड़ देते हैं. Let me explain the example. ठीक है ना? Again ये अभी हमने पहले भी एग्जाम्पल सॉल्व किए, अभी हम जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसके ऊपर हमने कंडीशंस चेंज की तो हमारे पास ये तीनों जो है टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, यानी कि तीनों ये जो हमने इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इन थ्री केसेस में डिस्कस किया है, तो तीनों केस उसमें इन्वॉल्व हो। लेट मी this is the example. This is the initial value problem, like dy by dx is equal to 2 over x y, and y at 0 is equal to 0. Linear differential equation, and this is also homogeneous because the degree, the right hand side, the degree of the numerator and the denominator is same, and overall the degree is 0. So this is homogeneous differential equation, and we can observe that we can solve it by variable of separation, and we can solve we can get the solution y is equal to cx square, where c is the constant, and apply the initial condition y at 0 is equal to 0, and I can see here for any c this is true. For any c, for any c real number, this is true. So y is equal to c x square is the solution of the initial value problem. तो इसका मतलब ये है कि c की कोई भी वैल्यू हो तो ये सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है. इट्स मीन दैट द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इसका जो सॉल्यूशन है इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद भी y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर है. हमें c की वैल्यू हम कोई फाइंड नहीं कर सके फिक्स वैल्यू इस इनिशियल कंडीशन से. इस इनिशियल कंडीशन से हम कोई c की फिक्स वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सके. सो y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन. अब आप अगर हम c की वैल्यू 1 चूज करते हैं, दैट्स इट, तो देन इट इज सॉल्यूशन. ठीक है ना, ये इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे तो फिर भी ये इसका भी सॉल्यूशन है और इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. सॉल्यूशन एक्चुअली वो है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे. तो अगर हम c की ये देखें तो ये जो y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर है ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और अगर हम इस इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर तो फिर भी ये सेटिस्फाई करता है, यानी कि y एट 0 इज इक्वल टू 0. अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 मिल जाती है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस initial value problem, but the value of c is arbitrary. So we have an infinitely many solution in this case, in this example. For example, we can draw the graph of solution, the family of the solution, like it is for the c1. I can put it when c is equal to 1. This is for the c1, and c1 is equal to, let's say this is c1 and this is c is equal to 1. Sorry, c is equal to 1 and this is for c is equal to 2. If y is equal to x square, then it is graph like this, and if y is equal to 2x square, it is graph like y is equal to, it will be compressed along the y-axis. So all these solutions, like I can draw here. ठीक है, अगर हम इसको यूं ड्रा करें इस तरह, यानी कि पैराबोला, अगर हम c की वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं तो फिर भी ये सॉल्यूशन होगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम c की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो इसका सॉल्यूशन डाउनवर्ड है. ठीक है, तो इसको वी हैव द फैमिली ऑफ द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक. वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. Let me go down. In this example we have infinitely many solutions, and in this example we just change the condition. The problem is same, the differential equation is same, but we are changing just the initial condition. Here y at 0 is equal to 0,
but here y at 0 is equal to 1. ठीक है, तो अगर हमने ये इनिशियल कंडीशन चेंज की है तो हम चेक करते हैं कि यार इसका सोल्यूशन का बिहेवियर क्या होगा। तो सोल्यूशन का जो सोल्यूशन है इसका वो तो सेम है, y is equal to cx square, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने फाइंड किया, हमने जस्ट इनिशियल कंडीशन चेंज की है। तो y is equal to cx के ऊपर जब ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो y at 0 is equal to 1, इट्स मीन दैट y at 1 replace y by 1 and x by 0, so y 1 is not 1 is not equal to c at 0। ये तो राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, y 1 है, so this is not equal, this is not true, this is not true, so y is equal to cx square is not the solution of the given initial value problem. It means that this initial value problem has no solution। हमने just initial condition को change किया। In the previous example it was y at 0 is equal to 0 and here it is y at 0 is equal to 1। हमने just initial condition जो है ना उसको change किया। Next I have a third example like here yes, again we have changed the condition, initial condition we have changed, y at 1 is equal to 2, y at 1 is equal to 2, it's mean that y is equal to cx square is the solution as we have found in the previous part, and when we apply the initial condition we can get the value of c, that is fixed, that is equal to 2, so y is equal to 2x square is the solution of the given initial value problem and it is unique। this is also called particular solution of the initial value problem। तो यहाँ पर हमने c की fixed value find out कर ली है, तो this is the solution of the initial value problem and it is unique। तो हमने ये देखें तीनों, हमने just initial conditions को change किया और हमारे पास जो solution है वो यूनिक भी आ गया और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी और नो सॉल्यूशन भी। तो एक तो ये इनिशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है एंड अदर थिंग इज दैट इट डिपेंड्स ऑन द राइट हैंड साइड, इस फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं राइट हैंड साइड। लेट्स हैव अनदर, we are just going to discuss about the domain of the function। तो अगर हम इसको this is the initial value problem, again I choose here y prime is equal to f of t y and अब सॉल्यूशन की जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, सॉल्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि अगर सॉल्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी जो इनिशियल वैल्यू है। सर असल में आवाज नहीं ठीक आ रही। एक्सक्यूज मी सर। जी आपको आवाज आपकी आवाज नहीं ठीक, आपको आवाज आ रही है, आवाज आ रही है लेकिन कटिंग हो रही है, सही समझ नहीं आ रही। ओके लेट मी, मैं अभी ट्राई करता हूँ। असल में ये मैंने नेट दूसरा कनेक्ट किया तो ये डिस्कनेक्ट हो जानी है ये मीटिंग, अगर मैं नेट चेंज करता हूँ ड्यूरिंग मीटिंग। तो मैं वैसे ना अभी कोशिश करता हूँ, ये सिग्नल्स जो हैं वगैरह डाउन हो गए हैं दोबारा, मैं देखता हूँ अभी, मैं अभी ट्राई करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं, मैंने वो पोजीशन उसकी चेंज की है, तो लेट मी सी कि अभी अगर आवाज आपको क्लियर आ रही है कि नहीं। जी फातिमा। जी सर आ रही है आपकी आवाज। जी ठीक है, तो अभी ये हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, द फंक्शन which satisfy this differential equation and this initial condition। ठीक है,
like here if we define in this way, जो initial condition है, initial condition है t at 0 पे, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो along here t axis and along here y axis, so initial point is t0, the value of y is y0. So the function starting from this point, the function satisfying this point, and maybe it is from t0 to t1, the domain, जैसे कि हमने वो जो previous example सॉल्व की, second example शुरू में, तो उसमें जो इंटरवल था वो डिफरेंट आ रहा था, इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो ये डिपेंड कर सकता है कि t0 टू गोज टू इंफिनिटी भी हो सकता है और फाइनाइट इंटरवल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। दूसरी बात ये है कि इस अब ये जो फंक्शन है, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगी, वो इस फंक्शन के डेरिवेटिव, यानी कि जो राइट हैंड साइड है इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो उसी के इक्वल आएगी। देन इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये जो फंक्शन है, द स्लोप ऑफ दिस फंक्शन एट एनी पॉइंट हियर, इस फंक्शन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो राइट हैंड साइड पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो उसी के इक्वल आएगी। देन इट इज आइडेंटिकल, then we replace when we put the function y of t here, it will be identical, और ये initial condition क्योंकि ये यहाँ से start हो रहा है तो इसमें it satisfy the initial condition। ये graphical representation, ये y of t is any function जो इसका solution है। तो domain जो domain है वो t0 t1 है, अब solution y of t, ये depend करता है कि t1 infinite भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो इनिशियल कंडीशन से हमने डोमेन स्टार्ट करना होती है कि t0 से, यानी कि जो इसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल कंडीशन मीन कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है जहां से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वो t0। डोमेन इन व्हिच द सॉल्यूशन इज डिफाइंड, so let's have another example. Consider the initial value problem dy over dx y square, y at 0 is equal to b. B is some any non-zero real number, and we have the solution y is equal to minus 1 over x plus c, and when we apply the initial condition y at 0 is equal to b, this is c is equal to minus 1 over b, and putting c, replace c by minus 1 over b here, and I can simplify this, y is equal to b over 1 minus b x। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से डोमेन जो है, ये जो इनिशियल पॉइंट है 0 है, तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या है b, तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे कि अगर हम सॉल्यूशंस को ड्रा करें तो यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक, यानी कि b तक, 1 ओवर b तक। इट्स मीन कि इसका जो डोमेन है वो है 0 टू 1 ओवर b, 1 ओवर b पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। सो इट्स मीन दैट इसका जो इंटरवल होगा वो 0 टू 1 ओवर b ओपन होगा। 0 पे क्लोज इंटरवल इसलिए कि 0 उसमें इंक्लूड होगा, 0 पे फंक्शन स्टार्ट होगा, जो सॉल्यूशन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इट्स मीन 0 पे b वैल्यू, और यहाँ से यानी कि कोई भी फंक्शन है, यानी कि यहाँ तक ये वर्टिकल एसिम्पोट, दिस इज वर्टिकल एसिम्पोट, सॉरी ये 1 ओवर b के ऊपर। तो जो डोमेन है वो डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन के ऊपर, जो डिपेंड कर रही है इनिशियल कंडीशन के ऊपर, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं डोमेन। ये अगर फंक्शन किसी और टाइप का आ जाए जिसमें वो यानी कि थ्रू आउट, यानी कि आगे b से ऑनवर्ड थ्रू आउट, 0 से ऑनवर्ड थ्रू आउट की इनफाइनाइट पे भी, यानी कि अगर हम 0 टू इन्फिनिटी भी डोमेन ले सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन पे। Now we have another example about the non-uniqueness of the non-linear initial value problem. I think you can check by yourself. I solved here, and you can check. Like first of all, ये non-linear problem है और zero जो है जो singular solution है वो इस differential equation का है. It satisfies the given differential equation. Singular solution. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो y of x is equal to x plus c का होल क्यूब आ जाता है। अप्लाई द इनिशियल कंडीशन एंड y at 0 is equal to 0, y is equal to x क्यूब, ये तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया, y is equal to
एक्स क्यूब, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इसका सोल्यूशन है एक, और दूसरा y इज इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो वो भी इसका सोल्यूशन है, सिंगुलर सोल्यूशन। तो इसका मतलब दो तो सोल्यूशन कंफर्म हो। इट इज क्लियर दैट टू सॉल्यूशंस are confirmed, zero solution and this y is equal to x cube, so the solution is not unique। ठीक है, अब यहाँ से हम फर्दर इसके जो सॉल्यूशन को इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। y of k is equal to, जैसे हमने वो प्रीवियस एग्जांपल में कंस्ट्रक्शन की थी, इसी तरह यहाँ पर भी हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो y at 0, हमने y k को इस तरह कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसमें जीरो सॉल्यूशन भी इंक्लूड कर लिया और नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो ये k के ऊपर हमने वेरिएशन लगा दी। तो अब अगर हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो डेरिवेटिव पे ये देखें, ये 3x माइनस के होल स्क्वायर, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये satisfy होगी फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड y at 0 is equal to 0। So the initial value problem has infinitely many solutions. You can check by yourself. This is not so difficult. Here we are going to study just introduce about the well postness of the mathematical model। कि एक मैथमेटिकल मॉडल जो है वो वेल पोस्ट का, यानी कि ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है ये भी किसी ना किसी फिजिकल मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस मॉडल को वेल पोस्ट कब कहा जाता है, ठीक है। इज अ वेल पोस्ट इफ द थ्री प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, इफ दिस इनिशियल सर कंडीशन, आपकी आवाज कटी। this initial condition represents some mathematical model, and this mathematical model is well posed if these three conditions are satisfied। The first condition, what is the first condition? The first condition is about the existence, यानी कि हम एक फिजिकल मॉडल से एक यानी कि हम किसी मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं किसी फिजिकल फेनोमेना को। तो अब हमने उस ये चेक करना है कि वो जो प्रॉब्लम हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो वेल पोस्ट भी है कि नहीं। तो वेल पोस्ट के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि वो प्रॉपर्टीज तीन जो है वो मस्ट सेटिस्फाई करे। कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अब हमने प्रॉब्लम तो कंस्ट्रक्ट कर ली है, लेकिन ये चेक करना है कि क्या उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने उसकी यूनिकनेस चेक करना होती है, उसके बाद हमने स्टेबिलिटी चेक करनी होती है सिस्टम, कि वो सिस्टम आया वो स्टेबल भी है कि नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। द सेकंड थिंग इज दैट द सॉल्यूशन इज यूनिक। द थर्ड कंडीशन, द सॉल्यूशन बिहेवियर चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन के ऊपर, जैसे जो इनिशियल कंडीशन के ऊपर उसकी वैल्यू है, इसी तरह कंटिन्यूअसली उसका जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो, उसका बिहेवियर चेंज हो अकॉर्डिंग टू द इनिशियल कंडीशन। ठीक है, हमें इनिशियल पॉइंट पे तो हमें इनिशियल पॉइंट पे तो उसकी वैल्यू का पता है, हमने उसी तरह ये चेक करना है कि क्या जो सॉल्यूशन का बिहेवियर है वो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंडीशन जो है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। तो ये तीन अगर चीजें यानी कि इसमें ओके हैं, देन वी से दैट द प्रॉब्लम इज वेल पोस्ड। तो ill post mean ke if the above three conditions are not satisfied, I mean maybe the one of the above condition is not satisfied, then this is called ill post problem। Now we continue the discussion on the existence and the uniqueness of the solution of initial value problem। We have the initial value problem like dx over dt is equal to ft of x, xt 0 is equal to x of 0, and f is defined from the domain D, and that is open and connected। domain की definition है, it must be open and connected। तो जैसे कि it is domain in this plane r square, it is like here, like I have drawn in this tx plane, and at t0 the here is x0, and this is the initial point। So the solution will be start from t0 and x0। Solution यहाँ से start होगा, will be start from here and must belongs to here, यानी कि domain से start होगा और domain में ही belong करेगा। ठीक है, ये भी चीज। तो ये solution का जो function जो solution function है वो it must start from this point and must belong to this set।
व्हाट इज अबाउट द एग्जिस्टेंस। अब हमने राइट हैंड साइड पे एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि एग्जिस्टेंस अंडर व्हाट कंडीशन। हमने तीन जो डिस्कस किए हैं एक्सक्यूज मी सर, ये ग्राफ, एक्सक्यूज मी सर, ये ग्राफ दोबारा बता दें, आवाज नहीं थी आ रही। ये डोमेन का ग्राफ है जो फंक्शन की डोमेन है स्मॉल एफ की। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि ये जो डी फंक्शन की जाहिर है कोई ना कोई डोमेन होगी ना। ये डिपेंड करता है ना कि वो ये डिपेंड करता है कि हो ये लाइन के ऊपर डिफाइंड भी है कि वो उसकी प्रॉपर उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है डोमेन, और इम्प्रॉपर भी हो सकती है, इसलिए मैंने ये सिंबल यूज किया है। और डोमेन को हमने ड्रा किया है टी एक्स प्लेन में। टी एक्स यानी कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, फ्रॉम आर टू आर। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके ओके ओके, लेट मी अगेन जी, अभी अभी देखें। हो गई है। जी सर अब आ गई है। आप दोबारा जरा बता दें क्या ओके कह रहे थे आप सर। लेट मी